brief that I have handled so far. High treason इससे पहले कभी ऐसा था नहीं, आप यहाँ से अंदाजा लगा लें सर. It came to me as a surprise. There were as many as 21 prosecutors appointed to bring home the guilt of the appellant, and I was the only one defending him, and that too जो मेरा एक गिला था. गिला जी योर लॉर्डशिप था. ये तो फिर आपका तस्दीक कर रहे हैं कि I am equal to 21. Your lordship, even I was ousted from the proceedings. और वो then I had to go to the Islamabad High Court. चले वो छोड़ें, ये पॉइंट to my rescue. और मुझे वो सुनते बाद में, मगर ये पॉइंट बताइए. Your lordship, 561 आपने जी कहा कि मैं वो 10A पे खड़े होते, नहीं 10A पे खड़े होते, 561 पे खड़े होते ऐसी. लॉर्डशिप ये तो हम अगर वो शुरू करेंगे तो ऑफ कोर्स एक नई विंडो खोलनी पड़ेगी, और उसके लिए इफ माय लॉर्ड्स आर इंक्लाइंड नहीं that would only be if the legal aids had come कोई आए तो and they had challenged the violations. अगर कोई आता तो हम खोले ना. लॉर्डशिप अब वो कहना मुनासिब तो नहीं है, बिकॉज आई ऑलरेडी अप्रिशिएट द स्टेप्स दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज ऑलरेडी टेकन. द लीगल एयर्स आर नॉट इन द कंट्री. नहीं वो हमें उनको पता चल गया. अच्छा, अब एक सवाल मैं अगर आपसे पूछूं, you said you had very grave reservations about the Lahore High Court. What were the grave reservations about the Lahore High Court? Your Lordship, you said I do not even appear in. Your Lordship, I was assisting. My engagement was to the extent of. ऐसी पूछ रहा हूँ. सिटी में आपने बहुत ही बिल्कुल. उसके बाद वो तो Your Lordship, I am not before the honorable judge for many years, even in the Supreme Court of Pakistan. Why? So मैं पेश उनके पास नहीं हो रहा. You want to disclose or not? I would not like to disclose. जनाब मुझे इन चेंबर पर्सन तलब करना चाहेंगे, मैं explanation. नहीं हम चेंबर में नहीं बुलाते किसी को. शाह साहब is aware, but for personal reasons, purely for personal reasons. शाह साहब is aware. लॉर्डशिप, मेरी एक प्रिंसिपल पोजीशन भी थी, स्टैंड भी था. तो मैंने इन ऑल फेयरनेस मैंने उनको वो आर्ग्यू करना चाहते थे, वो किया. बट और इन द मीन वाइल मैं ये भी एक्सप्लोर कर रहा था कि फैमिली मुझे देयर हैज टू बी अ फ्रेश एंगेजमेंट. मैं ये भी कहना चाहूंगा, माय प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन टर्मिनेट्स ऑन डेथ ऑफ द वकालतनामा खत्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, वकालतनामा खत्म हो जाता है, क्योंकि कल आके वो कह सकते हैं आपको किसने इजाजत दी. किसने इजाजत ये ये लोगों को बुलाएंगे. प्लीज सर एक चीज बताइएगा related to this. You see, this was a case which was forced upon the federal government by this court, but they did not go back to 12th of October. Now, in the light of the amendments made in the Constitution, Article 270 AA, read with Article 12, is the door still open to proceed against those who collaborated in what had happened on 12th Lordship, October? Had I been given the mandate to argue the appeal, my opening grounds would have been that this is a case where a constitutional crime has been investigated and prosecuted in an unconstitutional manner. For the reason, the obvious, the visible, the aiders, the abettors, the collaborators, those who were involved in the consultation process were dishonestly, there was a let-off. All the members, ये नेशनल असेंबली में ये सारी की सारी इंडोर्समेंट्स हुई इसके ऊपर. प्राइम मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट थी, लॉ मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट थी. प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के आप ऊपर देखें कि कौन कौन से लोग हैं जो इन्वॉल्व थे. इवन ऑनरेबल जजेस एज सेड बाय for myself have a different view. Not been
legalized, legitimized by this court, there would not have been 3rd of November. Of course, sir. But could 3rd of November have been directed, the federal government could have been directed to initiate from 3rd of November and leaving or ignoring 12th of October? Your Lordship, this was actually attempted right before the decision of the special court. The old prosecution team was denotified, and a new one was notified, who stepped in and filed an application that this complaint has not been filed correctly. And there should be certain amendments and changes in the number of accused and in allegations as well. But that application was not entertained, and in a haphazard manner, without recording 342, without listening to my submissions, closing speech, without leading defense evidence, a judgment was handed down, which was not a unanimous judgment. मगर ये अटेम्प्ट होने की कोशिश इस ट्रायल के अंदर भी हुई कि आप इन सारे ओवरऑल whoever was involved, इसका कैनवस बहुत वाइड था. Why target and narrow it down only to one person? This is repellent to common sense that these actions could have been taken single-handedly by one person without the advice of everyone. नहीं तो खैर ये तो मफरूजों में जा रहे हैं, मगर ये तो उससे तो कोई बात नहीं होगी कि कलेक्टिविटी विल abolish the individual act. वो है. It only points towards unfairness. हम जरा 5 मिनट के लिए उठते हैं और शायद फिर आज ही सुना दें उन सीपीज में भी. उधर तो आपको कुछ नहीं कहना है ना, और इसमें भी ठीक है. थैंक यू. साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ दरख्वास्त. सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ की अपील की हद तक फ़ैसला महफूज कर लिया है. चीफ़ जस्टिस का आज ही फ़ैसला सुनाने का इंदिया. हम 5 मिनट के लिए उठ रहे हैं, शायद आज ही ये फ़ैसला सुना दिया जाए. चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं. समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं. सुहेल, समाअत मुकम्मल हो गई है, क्या कुछ कार्रवाई रही है आज की समाअत में, तफसील से बताइए. देखें, वक्त दिया गया हुआ था परवेज़ मुशर्रफ की जो अपील की पैरवी कर रहे थे सलमान सफदर एडवोकेट, उन्हें कि आप पूछ कर बताएं कि मुशर्रफ के वर्सा अपील चलाना चाहते हैं या नहीं. आज सलमान सफदर ने अदालत को आगाह किया था कि फैमिली से 10 बार रब्ता किया लेकिन कोई जवाब तक नहीं मिला, जिससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो अपील में दिलचस्पी नहीं रखते. जब तक मुशर्रफ जिंदा थे तब तक तो वो चाहते थे कि इसका फैसला हो, लेकिन अब वो जवाब तक भी नहीं दे रहे, लिहाजा वो उनकी तरफ से मैं नुमाइंदगी नहीं कर सकता. जिसके बाद अदालत ने अब इस केस में उनकी अपील की हद तक फैसला महफूज कर लिया और चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि आज ही इस केस का फैसला भी सुनाया जा सकता है. फिलहाल हम 5 मिनट के लिए उठ रहे हैं. इस वक्फे से पहले जस्टिस अतल अल्लाह की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि अगर 12 अक्टूबर के इकदामात को वैलिडेट ना किया जाता, उन्हें कानूनी जवाब फराहम ना किया जाता, तो 3 नवंबर जैसे वाकयात भी ना होते, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम मफरूजों की बुनियाद पर फैसले नहीं कर सकते. लाहौर हाई कोर्ट ने जो गैर आईनी करार दिया था खसूसी अदालत को जिसने सजा सुनाई थी, उससे मुतल्लिक पूछा गया सलमान सफदर से क्या आपने उस पर भी कुछ कहना है, तो उन्होंने बताया कि वो चैम्बर में इस पर अपनी गुजारिशात देंगे, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि हम चैम्बर में किसी को भी नहीं सुनते. अब की अपील क्या तक फैसला महफूज कर लिया गया. बहुत शुक्रिया आपका सुहेल रशीद.